Yes, hello, Mr. Bakhtiar Bhatt. Welcome on Yourpedia platform, and let's start your snap thermodynamics for your final JKPSC interview for the post of assistant engineer in public works department. Yes, sir. तो बट आपने क्या समझा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? What is your understanding related to thermodynamics? Sir, thermodynamics is all about energy and its exchange in different forms, transformation into different forms. हीट और वर्क में कुछ डिफरेंस बता सकते हो मेरे को? Yes, sir. The major differences between heat and work. Sir, heat is a form of energy that gets transferred whenever there is a temperature difference. Sir, every other transfer is called as work transfer. ठीक है. अच्छा, कुछ एग्जांपल दे सकते हो मेरे को? How will you define work in thermodynamics? When you will say कि yes, work is transfer. Sir, when system boundary gets either contracted or expanded. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होना पड़ेगा बाउंड्रीज को. Yes, sir. अच्छा, मान लीजिए यू आर हैविंग ए कंट्रोल वॉल्यूम. Yes, sir. फिक्स्ड रीजन कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम. Yes, sir. Yes, तो sir. ओपन सिस्टम का तो बाउंड्रीज फिक्स्ड होता है. Yes, sir. तो उसमें मतलब वर्क नहीं होगा. देयर विल बी नो वर्क ट्रांसफर इन ओपन सिस्टम. No, sir. There is. देयर विल बी नो वर्क ट्रांसफर. Yes, sir. होता है. Are you my question? But Yes, sir. Yes, sir. closed system में fine, it's fine. Closed system में when boundaries are going to expand or contract, then only you can say work is transferred. अब open system में तो boundaries क्या है यार? Fixed है. You are having a fixed control volume. Yes, sir. तो फिर वहां पे वर्क नहीं होगा इसका मतलब? नहीं सर, होता है. स्टेडी फ्लो पंप है, टरबाइन है. तो फिर वहां पे कैसे डिफाइन करोगे वर्क को? अच्छा, बट मेरे को बताओ, वर्क इज ए पाथ फंक्शन. It's not a property. Can you convince me? Sir, this is how we can say work is not a property. Sir, we cannot stay at any particular state. The work is this much. Sir, there has to be change of state. Only then, sir, we can say that this much amount of work transfer has occurred. You know, open system work, we write it as minus integration VDP. Yes, sir. You know, develop that equation relation. Yes, sir. Go ahead. VDP, sir. VDP कैसे आएगा वर्क? मेरे को एक्सप्रेशन निकाल सकते हो ये? ओपन सिस्टम वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन VDP. Sir, through TDS equation. TDS equation, good. कैसे लिखोगे TDS? Sir, it is from first law of thermodynamics. हाँ, ठीक है. लिख के Sir, दिखाओ TDS. Sir, TDS is equal to DH minus VDP. ठीक है. Sir, TDS is DQ. सर, अगर हम सेम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, assuming kinetic energy change equal to 0, potential energy change equal to 0, sir, the work will equal to VDP. What do you understand by steady flow? Sir, steady simply means no change with time. Steady flow means that there is no energy accumulation or mass accumulation. No energy accumulation, no mass accumulation. Yes, sir. मेरे को थ्रोटलिंग के बारे में बता सकते हैं आप बट कुछ? सर, थ्रोटलिंग क्या है? जब हम फ्लूइड को पास करते हैं थ्रू एनी रेस्ट्रिक्शन लाइक पार्शियली ओपन वॉल हो या पोरस प्लग्स या कैपिलरी ट्यूब से, सर, इसका रिडक्शन इन प्रेशर होता है. We say that this fluid is said to be throttled. Sir, it is an irreversible process जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है. सर, सिंपली फॉर एग्जांपल, सर, हमारे घर में नल होता है ना. सर, नल को जब हम थोड़ा ओपन करते हैं ना, उसमें थ्रोटलिंग हो जाती है. दैट इज अ सिंपल केस ऑफ थ्रोटलिंग. तो थ्रोटलिंग में प्रेशर डिक्रीज करता है? यस सर. व्हाट अबाउट टेम्परेचर? Sir, the behavior of temperature during throttling is defined by Joule-Thomson coefficient. Very good. What is that? What is that Joule-Thomson coefficient? Sir, that is basically dou T by dou P at H is equal to constant. Mu is equal to dou T by dou P.
Good. अच्छा, but suppose you are having a hot potato. आपने एक hot potato को गर्म किया and you are Yes, sir. putting them hot potato in room. Yes, sir. So considering that hot potato as a system, how you can write the energy balance? How you can write first law of thermodynamics for that hot potato? Sir, energy lost by the potato will be equal to the energy gained by the air of the room. Energy lost by the potato, that is equal to energy gained by the room. Room is air, sir. But मैंने आपको सिस्टम के लिए पूछा है. Potato is our system. How you write first law of thermodynamics for potato? Energy balance potato के लिए कैसे लिखोगे? Sir, MCP delta T. MCP delta T. Yes, sir. Sir, heat That is loss is equal to equal. Sir, MCP is equal to, sir, mass of the potatoes, C of the potato, its final temperature, initial temperature minus final temperature. that is equal to what? The heat lost. Total Yes, heat sir. lost. Yes, sir. Total heat lost. Yes, sir. अच्छा, ये जो प्रोसेस है, इसमें एंट्रोपी जो है यूनिवर्स का इज गोइंग टू इंक्रीज. Yes, sir. How you calculate the entropy change of universe? Sir, it is equal to entropy change of system plus entropy change of surroundings. ठीक है. सर, ये जो पोटैटो है ना, इसकी एंट्रोपी चेंज होगी mc ln of t final by t initial. देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी. सर, जो हमारा एंट्रोपी चेंज ऑफ ईयर होगा, इट इज द सराउंडिंग्स फॉर दिस, सर, दैट विल बी इक्वल टू q by t plus q by t and q will be equal to mcp delta t. So their sum will come out positive. Yes, sir. Yes, sir. There will be a final increase in entropy of the universe. अच्छा, एंट्रोपी होता क्या है? But can you define some more about this entropy? Sir, it is difficult to define entropy, but it is a Latin word that means degree of randomness or disorderness. Sir, its physical significance is given by the second law of thermodynamics, that sir, a process always occurs in a direction in which there is a net entropy increase of the universe. Actually, you mentioned it as a measure of randomness or disorder. Can you give me some example? Like how the entropy, like suppose for that potato or any other system, can you give me some real life example of entropy? Real life example of entropy. Sir, when we add heat to a gas, it is internal energy increases. Sir, due to this internal energy increase, the kinetic energy of molecules increases. Sir, when kinetic energy of molecules increases, collision is increased. We see that there is an increase in entropy of the system. What is second law of thermodynamics? Sir, second law of thermodynamics has got two statements. One is the Kelvin-Planck statement, and second one is the Clausius statement. Kelvin-Planck statement deals with case with work-producing devices, and Clausius with work-absorbing devices. Sir, in simple, Kelvin-Planck statement states that heat cannot be completely converted into work. Sir, in this statement, it states that it is impossible to devise a heat engine producing network by exchanging heat with a single energy reservoir. We always there always have to be a second reservoir to which heat is rejected. That's called as sink. Sir, the second is the Clausius statement. Sir, that deals with work absorbing devices. Sir, we all know that heat always flow from a body at lower higher temperature to a body at higher temperature. The reverse is not possible unless work is done on the system. So that is actually this Clausius statement. You heard about thermodynamic temperature scale? Yes, sir. Thermodynamic temperature scale, but what is thermodynamic temperature scale? Sir, Kelvin scale. Kelvin scale is known as thermodynamic temperature scale. Yes, sir. Why? What do you understand by that thermodynamic temperature scale? Sorry, sir. You know, mixing is an irreversible process. Yes, sir.
Can you give me some real life example, like this is how we can say that mixing is irreversible? Why it is irreversible? Sir, entropy increases due to mixing. For what? The universe entropy is increasing, or for the system entropy is going to increase? सर सिस्टम के लिए भी इंक्रीज होगी. व्हेन सिस्टम के लिए इंक्रीज होगी तो यूनिवर्स के लिए भी तो होगी ना. But suppose system entropy is increasing and surrounding entropy is decreasing. Yes sir. System entropy, for example, it is increasing and surrounding entropy it is decreasing. Then the sum can be zero also. Nahi? Yes sir. How you can conclude कि if the system entropy is increasing, the processes will be irreversible? Because in a reversible process also system entropy can increase or decrease. The net entropy generation will be zero. Yes sir. तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है, उसको देख के आप कैसे ये इरिवर्सिबल कंक्लूड कर सकते हो? एंड सेकंड थिंग, ठीक है एंट्रोपी बढ़ रहा है, ओके, दिस टाइम फॉरगेट अबाउट दैट. टेल मी व्हाई इट इज इरिवर्सिबल. एंट्रोपी तो बढ़ रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ इफेक्ट वी आर गेटिंग. यस सर. तो आपको मेरे को बताना है कि इरिवर्सिबल क्यों है. वेयर आर द इरिवर्सिबिलिटीज? सर एनी नेचुरल प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ना सर. रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस. यस सर. Then why we are studying reversible processes? Sir, reversible process are just hypothetical processes. So they actually give they are basically studied because these processes actually show us the maximum efficiency that a system can have. Comparison के लिए sir just. आप मेरे को PT diagram दिखा सकते हो water का? Can you draw the PT diagram for water? But yes sir. Just go ahead and just show me the sublimation curve on that PT diagram. Just put it in front of the camera. So this. So this is for water or any other fluid? So this is for water. What about other fluids, other substances? Yes. So that will be this much. This will be the fusion curve. Why there is a difference for water and other substances? Because water on melting, this freezing, it gets expanded, and others get contracted. What is that point? Where all curves are meeting? Yes, sir. What is the name of that point where all these curves are meeting? So this triple point, this is the critical point. What is the difference between triple point and critical point? But so triple point is where all the phases are in equilibrium, they coexist. Sir, critical point is that point where these saturated liquid states and saturated vapor states, they meet. There is no difference between them. How much is the critical point for water? Sir, it is 374.15 Kelvin. And its pressure is. But my last question is to you, what is compressibility? Compressibility factor. You heard about compressibility factor? I have not read that. Gases, I have not read. Okay. Can we treat steam as an ideal gas? Sir, steam at high temperature can be treated as ideal. Superheated steam can we treat? Yes, sir. Superheated steam. Yes, sir. Superheated steam we can treat as an ideal gas. So this is because real gases at this high temperature and low pressure behave like ideal but gas. But superheated steam is at high temperature, fine, but it is at a very high pressure also. Yes, sir. Then how you can consider steam at high temperature, high pressure as a ideal gas? Sir, because gas molecules are far from each other, steam molecules. There are less intermolecular force of attraction between them. Okay, but let me give you the feedback now. Yes, sir. Overall, but your understanding is looking good. Your technical understanding is looking good. You answered most of the question. थोड़ा सा delivery style को और थोड़ा refine कर लेना है, थोड़ा अच्छा कर लेना है.
ठीक है, थोड़ा सोच सर के थोड़ा जो जो ये अभी रिलेटेड चीज है ना उनको आंसर करना है। सर बेहतर होता है सर, ये टेक्निकल मोस्टली सर थ्रू ग्राफ्स हम दिखा सकते हैं, इसलिए सर सॉरी, यहाँ पे सर जो टेक्निकल होता है ना सर, इनको हम मोस्टली एक्सप्लेन करते हैं थ्रू ग्राफ्स, दैट इज व्हाई इट इज हाँ नॉट हाँ हाँ गुड। हाँ। वर्चुअल में तो ये हम्म ठीक नहीं लगता है, हम्म हम्म, हम्म। इसीलिए सर थोड़ा डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। नहीं कोई बात नहीं, वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा लग रहा है, डिलीवरी स्टाइल भी ठीक है बट आपका जी सर। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी तो अच्छा है आपका, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, थोड़ा और इसको देख लोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर। मैंने आपसे शुरू किया था बेसिक क्वेश्चन से, हीट एंड वर्क। तो वर्क जो क्या होता है आप कैसे डिफाइन करोगे, वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी, तो व्हाट यू कैन से। अब वो आंसर आपने दिया बट वो बहुत रिफाइंड नहीं था, क्या बोलोगे सर, वर्क वी कैन नॉट डिफाइन एट ए पॉइंट, यस सर। वी कैन नॉट डिफाइन कि दिस इज हाउ मच वर्क ए सिस्टम इज हैविंग। सर So इसके लिए properties, थोड़ा all properties क्रॉस are द all बोर्ड। properties in function. All properties you can define at a particular point. किसी पॉइंट पे मेजर कर सकते हो ना, कितना काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है। सर वर्क को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते एक पॉइंट पे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी। यस सर। दूसरा वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क को आप कब बोलते हैं कि इट इज ट्रांसफर्ड व्हेन द इफेक्ट ऑफ सोल इफेक्ट ऑफ द रेजिंग सिस्टम ऑफ ऑन वेट। थिंग्स, सिस्टम, जब सिस्टम का इफेक्ट ऑन सराउंडिंग कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स। मेरे ख्याल से थोड़ा यस सा सर। नेटवर्क इंटरप्शन है, अभी ठीक है, आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ, एक स्टेटमेंट है बट वर्क का, वर्क क्या बोलते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम व्हेन द सोल इफेक्ट ऑफ द सिस्टम रेजिंग ऑन ऑफ वेट। सराउंडिंग कैन बी इक्वल टू रेजिंग ऑफ वेट्स। सर अगर आप मुझे कुछ definition वेट्स आती थी, रेज कर सकते हो, सर मुझे डेफिनेशन आती थी मगर मुझे समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है कि इस डेफिनेशन में एक्चुअली है क्या। देखो देखो फॉर एग्जांपल कुछ स्टीम ट्रेवल कर रही है टरबाइन से, यस सर। जब वो ट्रेवल कर रही है तो क्या आप उससे कुछ प्राइम मूवर कोई शाफ्ट घुमा सकते हो, बिल्कुल घुमा सकते हो। और वो जो शाफ्ट घुमाई आपने, क्या उस शाफ्ट को घुमा के कुछ वेट को रेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ कोई पुली लगा दें और पुली लगा के अगर आप कोई वजन लटका दें तो क्या उस वजन को रेज कर सकते हो, कर सकते यस। हो। एक्चुअली में हम ऐसा करते नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रेज द वेट, बट कैन वी यस सर। इक्वेट दैट प्रोसेस टू रेजिंग ऑफ वेट्स। यस सर। तो अगर स्टीम ट्रेवल करेगी टरबाइन से तो क्या उससे वजन कुछ रेज कर सकते हो, वेट रेज कर सकते हो, कर सकते हैं, इट मींस वर्क ट्रांसफर हुआ। यस सर। जनरेटर है, अब जनरेटर में तो आपको ये भी नहीं दिखेगा, आप कहोगे सर जनरेटर में तो ऐसा नहीं होता, कोई मैकेनिकल मोशन नहीं है, तो क्या वेट रेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जनरेटर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर सकते हो, यू कैन रन ए मोटर, और उस मोटर को रन करके क्या कर सकते हो, क्या आप वेट रेज कर सकते हो, कर सकते हो। इसका मतलब यस सर। जनरेटर में भी क्या हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है। आर यू गेटिंग। यस सर। तो टरबाइन में भी वेट रेस का आप इक्वेट कर सकते हो, जनरेटर में भी वेट रेस को इक्वेट कर सकते हो, तो इसका मतलब वर्क ट्रांसफर हो रहा है। यू गोट द आइडिया। बट यस सर। यस सर। तो वेट एक्चुअल में रेज करना जरूरी नहीं है, क्या आप उसका इफेक्ट इक्वेट कर सकते हो, नहीं करते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स की, आपको बुक में मिल यस सर। जाएगी, सर सेंजल में। मुझे सेंजल डेफिनेशन में ये पता बहुत थी। इंपॉर्टेंट, मुझे पढ़ा आपने सेंजल में डेफिनेशन। इसको। यस सर। हाँ, चलो। अच्छा, बाकी मैंने आपसे कुछ चीजें पूछी थी, स्टडी फ्लो, तो पहले स्टडी फ्लो को डिफाइन करो। आप आपने इक्वेशन तो बता दिया, थोड़ा सा आप जल्दी में लग रहे थे, हड़बड़ी कर रहे थे आप, तो आराम आराम से एक एक करके बताएं कि सर व्हेन द properties of the system are not changing with time, that flow is known as steady flow. यस और सर। सर स्टेडी फ्लो अपने को कब मिलेगा, when there is no accumulation of energy is taking place in the system and when there is no accumulation मास। of heat is taking place, mass. तो mass in equal to mass out, energy in equal to energy out, then only we can realize the steady flow. ठीक यस है, सर। तो थ्रोटलिंग आपने ठीक बताया, बट एग्जाम्पल दो, इट्स गुड टू गिव द एग्जाम्पल, बट पहले उसको डिफाइन करो। सर थ्रोटलिंग इज ए प्रोसेस, थ्रोटलिंग इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, we expand a particular fluid by passing it through a partially open valve, some porous plug. Okay, and sir throttling by nature it is highly reversible process, it is an isenthalpic process. And sir I can give you some example of throttling. If you will consider a water passing through a tap, that can be considered as a partially open tap, that can be considered as a throttling थ्रॉटल। process. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, मैं मेरे को जो लगा आप में पोटेंशियल है, मतलब आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, बट मैं बताऊं आपको, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है,
रेयरली मेरे ख्याल से कोई ऐसा ही एक आध क्वेश्चन होगा जो आप ढंग से आंसर नहीं कर पाए, तो आंसर आपको पता है बट थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके बनाना है। जैसे बोलते हैं ना कि आपने डिश तो अच्छी बना ली, उसकी सर्विंग भी अच्छी बनानी है। सर्विंग मतलब जब सामने रखते हैं ना, उसके तरीके से रखना है ताकि जो खाने वाला है, इंटरव्यूअर है, उसको अच्छा लगे। ठीक द है आइडिया बट यस सर यस सर। तो थोड़ा ऑब्जर्व करो, टेक्निकल जो आपने पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट है ना, उसमें यस सर लिखते रहो बीच बीच में, मतलब उसकी वो टेंशन की बात नहीं है। एक आपको पता है Q1/T1 दैट इज इक्वल टू Q2/T2, यस इसको सर। बोलते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। सर इसी को अब ये तो इसमें पता था आपका मुझे। जो हीट है, जो हीट है ना, हीट हीट क्या है इसमें थर्मोमीटर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। है, हीट थर्मोमीटर आपका प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। यस सर यस। तो इसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बाय मेजरिंग द हीट यू कैन डिफाइन द टेम्परेचर, ठीक बाय है सर। मेजरिंग द हीट यू कैन डिफाइन द टेम्परेचर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। आर यू गेटिंग? टेम्परेचर यस सर स्केल यस। क्या होता है? which we use for measuring the temperature। उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर भी हो सकती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपका वोल्टेज भी हो सकती है, there are so many things we can यस use सर as a thermometric property। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल में हीट इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अगर आपने एक हीट डिफाइन कर दिया एट ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, so 1Q another temperature, both are fixed, particular heat transfer at a particular temperature। now by measuring the heat transfer you can define the temperature, यस सर। बट वो किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। वो ठीक बताया आपने, थोड़ा सा उसको और ऐड कर लेना। चलो मेरे को बाकी ठीक लगा है, बट बाकी क्वेश्चन आपने ठीक लाइन पे आंसर कर दिए थे, तो जो मैंने आपको फीडबैक दिया उस पे काम करो। आई थिंक देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके सर थैंक्स। ओके, बट गुड लक एंड फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट। ओके सर। Again you can join me if you feel for this subject or any other subject also। यस सर। सर आई विल जॉइन पावर प्लांट RIC। Yes, you can join।